to be laid on the table, Sri Jayant Chaudhary. Honorable Chairman, I, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 1 of the serial number 2 of the revised list of business. Sri Ramdas Athavale. Chairman, sir, I lay on the table of the House papers listed against my name at serial number 2 in today's revised list of business. Thank you. Sri Nityanand Rai. मैं आज की संशोधित कार्यावली में क्रमांक संख्या 213 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं। श्री अजय टमटा की अनुमति से मैं संशोधित कार्यसूची अजय जी, अजय टमटा या अजय टामटा? टमटा। श्री अजय टमटा। महोदय, आपकी अनुमति से मैं संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। श्री सुकांता मजूमदार। आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यावली की क्रम संख्या 2 के क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेजों को मैं सभा पटल पर रखता हूं। श्री हर्ष मल्होत्रा। आदरणीय सभापति जी, आपके अनुमति से मैं संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 6 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखता हूं। लेइंग ऑफ CAG रिपोर्ट्स, Dr. L. Murugan. Respected Chairman, sir, with your kind permission, on behalf of my colleague Sri Pankaj Chaudhary, I rise to lay on the table under class 1 of Article 151 of the Constitution a copy each in English and Hindi of the following report. 1. Finance accounts, volume 1 and 2, and appropriation accounts for the year 2022-2023 in respect of the Government of Union Territory of Jammu and Kashmir. Number 2, Union Government Appropriation Accounts, Postal Services for the year 2022-2023. Number 3, Indian Railways Appropriation Accounts, Part 1, Review, Part 2, Detailed Appropriation Accounts, and Part 2, Detailed Appropriation Accounts, Annexure G for the year 2022-23. 4, Report of the Controller and Auditor General of India for the year entered March 2022, Union Government Civil Subject Specific Compliance Audit Central Autonomous Bodies, Report number 3 of 2024. Number 5, Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended March 2022 on management of health services in railways and management of parcel service in Indian Railways, Union Government Railways Compliance Audit, Report number 5 of 2024. श्रीमती नीमूबेन जयंती भाई बामनिया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के आगे अंकित कागजात सभा पटल पर रखती हूं। रिपोर्ट ऑफ द कमिटी ऑन गवर्नमेंट assurances, Dr. M. Thambidurai. Honorable Chairman, sir, with your kind permission, I rise to present the 78th report in English and Hindi of the Committee on Government Assurance listed at serial number 3 of the today's revised list of business. Thank you. Statement by Minister Sri Rajiv Ranjan Singh उर्फ ललन सिंह। माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से आज के संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम से अंकित वक्तव्य सदन के पटल पर रखता हूं। Matters. Yes, Tiruji. Sir, in the business advisory meeting, sir. Sir? Are you raising a point of order? Yes, sir. You want the rule? Sir, so far House is in order. Everything has gone smoothly. I wonder what could be point of order. Sir, you want the rule? Yes, sir. Sir, let me say the points. Yes.
Sir, in the Business Advisory Committee, we all discussed which are the 5 ministries that will be taken up. 1 second. I get your point. Honorable members. Sir, let us say. 1 second. Let me have my say, sir. No, Give me 2 minutes. I get your point. When I am reacting. Yeah, you give me 2 minutes and then whatever you say, we will accept. 1 second. 1 second, Tiruchi. You are a senior man. I understood. Take your seat, please. Please. Honorable members,